Now, uh, last time we started with FRA, but unfortunately, we could not complete the first reading of FRA, which is Introduction to Financial Statement Analysis. I'm assuming that the weightage of this particular topic in your CFA Level 1 exam would be 15%. And this is the first reading, which is Introduction to Financial Statement Analysis. Now, when I'm talking about financial reporting, what does financial reporting refers to? Financial reporting means how you are showing your company's performance to your investors, to all the stakeholders in the company, whether it is shareholders, creditors, or any party who's having interest in your company. How you are showing your performance to all the interested parties, right? That depends on financial reporting process. Now, even the government is a stakeholder in the company. Why I'm saying government is also a stakeholder? Because the company pays taxes to government. So whoever is a stakeholder in the company, everybody is interested in financial reporting. So how the company is showing their financial performance to outsiders, maybe investors, creditor, or any other interested party, that is what financial reporting refers to. And it means how you're preparing a financial statement, how you are reporting your financial statements. Now, when I'm saying financial statement analysis, so after analyzing the financial statement of a company, if you're taking an economic decision, what could be the example of an economic decision after analyzing the financial statements of a company? If a shareholder has to decide whether to buy this share or to sell this share, that is an economic decision. Now, another example could be if a lender has to lend certain money to the company, and if he is doing analysis of financial statement whether to lend to this company or not, that is also an example of economic decision. A financial analyst, what he does, he analyzes the past performance of a company, and based on current financial position, he'll make certain estimates about future, how this company is going to perform over a period of time. That is what he's going to analyze in financial statement analysis. So a financial analyst, he'll also make projections about future, how much profit this company can generate over a period of time, how much cash flow this firm is going to generate in future. All this is a part of financial statement analysis, and that's a very simple term. Now, what are the different types of financial statements? So when I'm talking about different types of financial statement, the first is your balance sheet, second one is income statement, and third one is cash flow statement. So we have separate reading for balance sheet, income statement, and cash flow statement. So first, I'll discuss about balance sheet. So what is a balance sheet? Balance sheet is always prepared on a particular date. The first thing which you need to remember is that balance sheet is always prepared on a particular date. Balance sheet as on 31st of March 2020. When I'm saying as on 31st March 2020, what does it mean? Whatever is the status, financial status or financial position of the firm, as on this date, it will be reflected in balance sheet. And balance sheet is always a stock concept. It considers the financial position of the firm as on a particular date, whereas income statement is prepared over a period of time. So whatever is the financial position of the firm over a period of time, the profitability of the firm over a period of time, the financial performance of the firm over a period of time is reflected in income statement. And this is a flow concept. So whatever changes are happening during a particular year, that gets reflected in income statement. Cash flow statement is on cash. It's a pure example of cash basis of accounting. Cash basis of accounting means when you're receiving cash, it will be an inflow. When you're paying cash, it's an outflow. Now, when I'm talking about accounting, there are two concepts. One is called accrual basis of accounting, and the second one is cash basis of accounting. In accrual basis of accounting, what we consider, whenever you have delivered goods or services, whether you have received money or not, you can recognize a revenue. So in accrual basis of accounting, what we do, revenue is recognized when it is earned.
and expense is recognized when it is incurred. What does it mean? It means that if I have delivered goods and services, but I have not received cash, but still I have the flexibility that I can recognize revenue in my books. I have purchased certain items from my vendor, right? But I have not paid cash. But still in that case, I can recognize expense in my books. Whereas in cash basis of accounting, revenue is recognized when cash is received. If you have delivered goods and services, but you have not received cash, no revenues can be recognized under cash basis of accounting. So when cash is received, expense is recognized when cash is paid, right? Generally what happens, we follow accrual basis of accounting. Most of the firms follow accrual basis of accounting. I have not seen any firm following cash basis of accounting. Generally, it is accrual basis of accounting. We'll discuss all these terms in detail, but just to give an overview of what is accrual basis of accounting and what is a cash basis of accounting. So when I'm talking about cash flow statement, I'll be talking about cash flow from operations, cash flow from investing activity, and cash flow from financing activity in a separate reading. So balance sheet. How does it look like? On one hand side, you have assets, and the other hand side, you have liabilities and equity. What is your accounting equation? Accounting equation is assets is equal to liabilities plus equity. Now, how do you define assets? Something which can give you future economic benefit. Something which can give you future economic benefit is asset. How do you define liabilities? And whatever money you're owing to your lenders and other creditors is liabilities. So after deducting liabilities from asset, whatever is left, that is what we call owner's equity or shareholders equity or shareholders fund or net assets. So equity is also known as shareholders fund, net assets, shareholders equity. So after paying off liabilities, whatever asset is left, that is known as net asset or equity. And that is a residual interest. Why we are saying residual interest? Because first we are paying money to our lenders, and whatever remains, whatever residual is left, that belongs to equity shareholders. So what is my accounting equation? Assets is equal to liabilities plus equity. And this is fairly simple, right? Now, whenever I have to buy certain assets, if I have to buy certain assets for my firm, there are two options for me. Generally, there are two options. Either I'll borrow money through debt financing, right? Borrowing money or debt financing, or I'll put in my own money. That is equity financing. So how much proportion of assets is being purchased through debt and how much proportion of assets is being purchased through equity, that is what we call capital structure. So the proportion of liabilities and equities used to finance a company are known as capital structure. How you are financing your assets, how much debt is also a liability, how much liability is there, how much equity is there, that is what we are calling here as capital structure. It's as simple as that. So a capital structure means what? How you are financing your assets. How much proportion of asset has been financed by debt and how much proportion of assets is being financed by equity. That is a capital structure. So capital structure is nothing but a proportion of or a mixture of debt and equity. Any doubt till here? Or shall I move on? बोलिए बच्चे, किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? No, sir. ठीक है, thank you. Kulraj Singh, I hope this is very, very simple. This is very basic. Shall I move on? Yes or no बोलते रहिए please. Yes, sir. Yes, sir. Very good. आप बोलते रहते हो मुझे अच्छा लगता है. Now, coming back to this balance sheet. So what I said, this is my balance sheet. So in balance sheet, you have assets and
On this hand side, on left hand side, you have liabilities and equity. What is the format of an income statement? Sales minus cost of goods sold gives you gross profit. From profit, I subtract selling, general, and administrative expenses. That gives you what? Earning before interest, tax, depreciation, and amortization. From this, I'm subtracting depreciation and amortization. It gives me EBIT. From this, I'm subtracting interest component. That gives me profit before tax. Then from this, if I'm subtracting tax, this gives me net income. Now, let us talk more about this net income. See what is happening here. To all your debt holders, what you are paying? Interest. So the first claim belongs to debt holders or bondholders. Then what happens after paying taxes? Whatever is left, this net income is also known as, from net income, then I'll pay to preference shareholders. So net income minus preference dividend. This नो net income. सर, सॉरी सर, बट थोड़ा फास्ट हो रहा है, मतलब ये टर्म्स ये सब नहीं है हमारे लिए, ये मतलब ये Okay. Oh, Pankaj, I'm so sorry, बच्चे. मैं भूल गया था कि you have a science background. I'm so sorry. Anyways, तो मैं इसको और explain कर देता हूँ. I'll just. Okay. Now, when I'm saying sales means अगर हमने बच्चे 500 करोड़ का गुड्स बेचा, मान लो कोई एक टी शर्ट बनाने की कंपनी है, टी शर्ट बनाने वाली कंपनी ने 500 करोड़ का टी शर्ट बेच दिया, ठीक है. अब उस टी शर्ट को बनाने में उसने रॉ मटेरियल यूज किया होगा, उसको हम बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. मान लो किसी ने 500 करोड़ का टी शर्ट बनाया, उसके लिए रॉ मटेरियल यूज कर लिया बच्चे 200 करोड़ का. उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया बच्चे? उसका ग्रॉस प्रॉफिट इज 300 CR. यहां तक कोई प्रॉब्लम पंकज? नो सर. ठीक है. फ्रॉम दिस देन अब सिर्फ रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो नहीं है, हमारा सैलरीज होंगे, सेलिंग, जनरल, अगर हम बेच रहे हैं कुछ कमीशन पे कर रहे हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस है, सैलरीज है, उसको हमने बोला सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. ये मान लो मेरा 100 करोड़ है बच्चे. इसको माइनस करने के बाद जो बचा उसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. ये हमारा कितना बचा बच्चे? 200 करोड़. Whatever assets we have purchased, मान लो कोई प्लांट एंड मशीनरी हमने लगाया, तो उसका वैल्यू भी तो धीरे धीरे डेप्रिशिएट करेगा. So what is depreciation? Depreciation is nothing but fall in the value of an asset due to wear and tear or obsolescence. वो depreciation, is it a cash expense? No, it is not a cash expense. हम बोल रहे हैं हमारे assets का value गिर रहा है, तो कोई cash का outflow नहीं होता हमारा, right? सिर्फ हम क्या बोलते हैं, हमारे assets का value गिर रहा है notional term में, बट हमें इसके लिए कोई कैश पे करने की जरूरत नहीं है. तो लेट्स अज्यूम ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये हमारा है. दिस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज, लेट्स अज्यूम दिस अमाउंट इज 50 CR. Now what is my earning before interest and taxes? This is coming 150 crore. Now whatever assets I have purchased, whatever businesses I have set up, maybe for this business I have taken a debt, I have borrowed a money. On borrowed money I have to pay interest. So let's assume that I have paid an interest of 50 crore. Now what is my profit before tax? My profit before tax would be 100 CR. Pankaj, any problem till now? नो सर. Okay. Now tax rate is 50%. So on a profit of 100 crore, let's say you have to pay 50% tax. How much will be your tax outflow? 50 CR. 50. Now this is my profit after tax. इसको हमने बोला बच्चे कि हमारा कितना बचा? 50 करोड़. For debt holder, मैंने पहले ही बोला, when you're financing your asset, there are two options. Either you'll borrow money or you'll put in your own money, which is equity. Debt holder को हमने already pay कर दिया. This profit after tax is also known as net income. There is another source of money which is called preference share. We'll discuss in detail about preference share later on. So now what I'm saying कि net income में से then first I'll be making payment to preference shareholder. Generally nowadays preference share is
not commonly used. So net income minus preference dividend, मान लो हमारा कुछ भी amount लेके चल देते, ये मान लो बचा हमारा 40 CR, right? This net income minus preference dividend, I have paid to bondholder, I have paid to preference shareholder. Now who remains? Only equity shareholder. So net income minus preference dividend is known as net income available to common shareholder. Net income available to common shareholder, right? So this net income minus preference dividend is net income available to common shareholder. Now this entire money belongs to common shareholder. So let's say this money is 40 crore. Out of this 40 crore, the company decides that we are going to pay dividend because this money belongs to equity shareholder. The company says, okay, we have generated a profit of 40 crores for equity shareholder. Out of this, 10 crore profit we are sharing with the shareholder. This is called dividend. So how much is the dividend payout? Can you tell me how much is the dividend payout? Out of 40 crore profit, 10 crore has been paid in form of dividend. So dividend payout is how much? 25%. 10 divided by 40 into 100. This is 25%. Rest of the money, company says, we are going to retain it. This is called retained earnings. This is called retained earnings. This retained earnings, company is retaining this money maybe for future use, future expansion. How much is the retained earnings now? 30 crore. So if my dividend payout is 25%, what is my retention ratio? Retention ratio means how much money the company is retaining with itself. How much is the retention ratio, Pankaj? Can we call it that this is 75%? Sir. So 25% has been shared, dividend has been given to the shareholders. Rest 75% money company is retaining with themselves, right? Now, what I'm trying to explain here is this entire exercise I have done for you. So what I am trying to say that here is your assets and here is your liabilities and equity. What is the linkage between income statement and balance sheet? This net income minus preference dividend में हमने dividend pay कर दिया और जो बाकी बचा उसको हमने बोला retained earning. This retained earnings flows from income statement to equities in balance sheet. ये कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? इनकम स्टेटमेंट से कहाँ रिफ्लेक्ट होगा बच्चे? दिस विल गो टू in balance sheet. This is the linkage I am trying to establish between balance sheet and income statement, right? And why it is important for you to understand. Now this equity has got two components. Now what does equity means here? Equity means the first is your transaction with shareholders. Transaction with shareholders. The second component is because of net income. ये जो retained earnings वाला part है. तो अगर मैं बोलूं कि एक साल में इक्विटी में मान लो चेंज आया 50 करोड़ का, ये चेंज दो कारण से आ सकता है. एक चेंज तो ये है कि भाई कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा, रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ा, वो रिटेन्ड अर्निंग्स इक्विटी में चला गया. दूसरा हो सकता है कंपनी ने और शेयर्स इशू किए हो या हो सकता है पुराने शेयर्स को रीपर्चेज किया हो. तो जो भी इक्विटी में चेंज आता है दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स. वन इज ट्रांजैक्शन विद शेयरहोल्डर्स एंड द सेकंड वन इज बिकॉज ऑफ दिस नेट इनकम और रिटेन्ड अर्निंग component, right? In this context, let us understand this point, and this point relates to statement of comprehensive income. There is something called statement of comprehensive income. Read this line carefully. What it says, it reports all changes in equity except for shareholder transaction. यानी ये किसकी बात कर रहा है बच्चे? मैंने आपको पहले भी बताया कि इक्विटी में जो भी चेंज आ रहा है दो कारण से, ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग. Statement of comprehensive income is reporting changes in equity, all changes in equity except this. Yani statement of comprehensive income will report how much changes in equity is happening because of this, not because of this. So statement of comprehensive income will give you changes in equity happening because of this component, not because of this component. I hope it is clear now. No doubt. कृति क्लियर है बच्चे? Yes, sir. पंकज कोई दिक्कत है? ओके ठीक है चलो. Revenues I have already explained. Expenses I have already explained. Other income, what is the meaning of this other income? Let's say you are in the business of steel.
आपका जो कोर बिजनेस है वो स्टील बिजनेस है, या आप मेरा एग्जांपल ले लो, आई हैव माय कोर बिजनेस इज, लेट्स से कि आई गिव कोचिंग क्लासेस और साथ में मैं शेयर्स में ट्रेड भी करता हूँ, तो मेरा जो कोर इनकम होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ फीस। और अदर इनकम में क्या आ जाएगा बच्चे, अगर मैं शेयर से कुछ इनकम अर्न कर रहा हूँ, दैट इज नॉट माय कोर बिजनेस, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ अदर इनकम। सो व्हाटएवर Excuse इनकम। me. Excuse me, sir. हाँ सर, Sir, I'm really sorry to interrupt. Actually, I wanted to ask that how paying dividends is not the part of change in matlab, changes because of income statement and because of transaction of shareholder. अच्छा, डिविडेंड जब आप पे करते हो या जब कंपनी पैसा लगाते हो, वो ट्रांजैक्शन किसके कारण हो रहा है बच्चे, शेयर होल्डर के साथ ही Because तो of ट्रांजैक्शन कर। shareholders. हाँ जी, Yes, लिखा sir. हुआ है। But as in जो net income का treatment होता है, there are it is divided into two parts. तो मतलब वो actual में तो net income की वजह से हो रहा है ना, income statement की वजह से. हाँ बच्चे, लेकिन जो डिविडेंड आप पे कर रहे हो दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स, वो इक्विटी में नहीं फ्लो करता, इक्विटी में तो रिटेन अर्निंग फ्लो करता है, यही बताया ना मैंने बच्चे, डिविडेंड वाला पोर्शन थोड़ी ना इक्विटी में फ्लो करता Alright, sir. है ना। दैट्स व्हाई ब्रैकेट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ रिटेन Yes, sir. अर्निंग्स, राइट। ओके, Okay, sir. अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड यहाँ पे इन्होंने दे दिया, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, राइट। नाउ व्हाट इज दिस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? जैसे अगर हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया बच्चे, अब इनकम स्टेटमेंट में पंकज सबसे लास्ट में क्या आ रहा था, एक टर्म नेट इनकम आ रहा था ना, एक टर्म और आ गया Yes, ओसीआई। sir. OCI is other comprehensive income. This net income, I am saying that this income is because of my core business. Whatever comes, whatever is not covered our core business will go to OCI. एक जनरल स्टेटमेंट मैंने दिया, जो भी मेरे को अदर इनकम हो रहा है, that is happening not, that is not occurring because of my core business but because of some other businesses, that will be reported in OCI. अब now you'll say कि भाई अदर इनकम हो रहा है, अदर बिजनेसेस से आ रहा है या कोर बिजनेस से है, तो मेरे लिए इनकम। सो व्हाट दे आर सेइंग, यू हैव गॉट टू ऑप्शंस, या तो आप एक प्रिपेयर कीजिए और जिसको बोलता है वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, statement of comprehensive income. Now, what this statement of comprehensive income means, statement of comprehensive income means this is a combination of net income plus OCI. कोर बिजनेस से जो आया, अदर बिजनेस से जो आया, सबको ऐड कर दिया तो मेरा बन गया स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। Now, is it mandatory for you to report this statement of comprehensive income? There is a flexibility for you. And what this flexibility is, either you can present a single statement of comprehensive income. यानी बोलता है कि आप एक सिंगल स्टेटमेंट बना दो, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें नेट इनकम भी दिखाई पड़ जाएगा, ओसीआई भी। या दूसरा ऑप्शन क्या है, एक बना दो आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जिसमें दोनों रिफ्लेक्ट होगा, नेट इनकम प्लस ओसीआई, और एक आप बना दो इनकम स्टेटमेंट जिसमें सिर्फ रिफ्लेक्ट होगा नेट इनकम। If somebody wants to differentiate that how much of the income is coming because of net income or core business and how much is coming because of other businesses, दोनों statement के difference से you can clearly make out that how much is coming because of core business and how much is coming because of other businesses. There are options for you. Either you present a single statement और यू प्रेजेंट टू डिफरेंट स्टेटमेंट, एक में नेट इनकम और ओसीआई को कंबाइन कर दो और एक में नेट इनकम को अलग रखो, दोनों के डिफरेंस से आपको नंबर के डिफरेंस से पता चल जाएगा हाउ मच इज कमिंग बिकॉज ऑफ ओसीआई। दिस फ्लेक्सिबिलिटी लाइज विद रिपोर्टिंग, lies with the company as far as reporting is concerned, right? सर हाँ जी सर। जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम नेट इनकम ऐड करेंगे, वो जो हमारा इनकम स्टेटमेंट से लास्ट पार्ट निकला वही ऐड करेंगे ना? हाँ बच्चे। तो सर फिर आपने वो एसओसीआई में वो क्या बताया था कि एक को इंक्लूड करेंगे एक को नहीं करेंगे, फिर उसका फायदा क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या बोलता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सिर्फ हम नेट इनकम वाले कंपोनेंट को करते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि जो हमारे कोर बिजनेस से आ रहा है उसी को, जो इक्विटी में चेंज आता है दो कारण से आता है, मैंने पहले भी बताया इक्विटी में चेंजेस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, वन इज बिकॉज ऑफ दिस एंड वन इज बिकॉज ऑफ दिस। तो हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, हम
स्पेसिफिकली फोकस करेंगे इस कंपोनेंट पे। अब आप बोलोगे कि सर ये नेट इनकम हम देखें कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखें, तो इफ यू हैव कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के कारण जो चेंज आ रहा है वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, जिसमें नेट तो इनकम और ओसीआई बेसिकली जो एक तरीके से जो इनकम स्टेटमेंट का एंड में एनआई आया बस वो ऐड कर दो, राइट? ओसीआई और एनआई दोनों को ऐड करके वो फाइनली कहाँ फ्लो करेगा, इक्विटी में ही जाएगा बच्चे, ठीक है ना। तो जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, आई एम राइटिंग इट इन अ वेरी सिंपल टर्म। Now changes in equity is happening because of two reasons. One is because of transaction with shareholders. And the second one is because of comprehensive income. अब ठीक है, इसमें नेट इनकम और ओसीआई दोनों आ गया। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम will report changes in equity happening because of this, not because of this. Is it clear now? यस सर। ठीक है, कोई भी दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना बच्चे। एफआरए में यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि रिपोर्टिंग कैसे करना है, व्हाट अ पर्टिकुलर term means. Everybody has to be crystal clear in your mind. Pankaj, I hope it is clear to you. Yes, sir. Okay. Let's move on. Okay. Statement of changes in equity. अब देखो. Reports the amount and sources of changes in equity, investors in investment in the firm over a period of time. अब मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सिर्फ इसका बताएगा। एक वर्ड आ गया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसमें ये भी आएगा और ये भी आएगा। Statement of comprehensive income में changes which is happening because of comprehensive income. Statement of changes in equity means changes happening because of comprehensive income plus transaction with shareholders. भंडारी जी क्लियर है? यस सर, सर हो रहा है धीरे धीरे प्रोसेस। हाँ, ये प्रोसेस होना जरूरी है, ठीक है ना। एफआरए में बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है, इसीलिए मैं अलग अलग बाइफर्केट करके आपको बार बार लिख के समझा रहा हूँ, ठीक है ना। सर वो चेंजेस इन इक्विटी में वो क्या नेट चेंजेस इन इक्विटी में वो नेट इंटरेस्ट आएगा ना, मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में दोनों के कारण आएगा बच्चे। जो मैंने लिखा ना, दो कारण से होता है, इसके कारण से और इसके कारण से, दोनों इंक्लूड होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सिर्फ ये सेकंड वाला कंपोनेंट आता है, ठीक है। यस सर। ओके, नाउ फर्दर दीज गाइज आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो और फाइनेंसिंग कैश फ्लो। तो थोड़ा सा इसका मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है ये चीज। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट, basically we are talking about three kinds of cash flows: cash flow from operations, cash flow from investing, and then cash flow from financing activity. What is cash flow from operating activities? अगर आप माल बेचते हो, आपको जो पैसा मिलता है, या आपको जो सामान आपने बेचा उसको बनाने में जो कॉस्ट लगा, so revenue, sales from cash received from sale of goods, cash paid for raw material, everything is a part of cash flow from operations. Whatever cash flows are happening because of core business activity, operating core business activities के कारण whatever cash is getting paid or whatever cash you are receiving, that will be reported in cash flow from operation. That belongs to your core business activity. Cash flow from investing means if you are buying plant and machineries, or if you are selling plant and machinery, that is a part of investment, right? If you're buying shares of a company, that is also a part of investing because you are making an investment. Cash flow from financing means cash flow from financing, how you are financing your assets. आप borrow कर रहे हो पैसा या आप equity shares issue कर रहे हो, that is a part of cash flow from financing. Each and every item of cash flow we'll be discussing in detail in cash flow statement. As of now, what you need to remember, whatever cash flows are happening because of core business activities is CFO. Whatever investments are happening, investment in plant and machinery, investment in shares and bonds, this will be a part of cash flow from investing. Now, how you're financing your assets by issuing bonds or shares,
that will be a part of cash flow from financing. It's as simple as that. Each and every item of CFO, CFI, and CFF will be discussing in detail in cash flow statement. Okay. Now, there are other items also apart from your income statement, cash flow statement, and balance sheet. There are certain other items also. And the first item which I'm presenting here is financial statement notes or financial statement footnotes. So apart from these core financial statement, there are certain additional items which are given in annual report of a company. Whatever information is given in your balance sheet, income statement, or cash flow statement, if you want a detail about those information, that you'll find in financial statement footnote. आपने बोला कि भाई हमने 500 करोड़ का माल बेचा, अब किस ज्योग्राफी में कितना बेचा, इंडिया में कितना, यूएस में कितना एक्सपोर्ट किया, कौन से कस्टमर को कितना एक्सपोर्ट. इफ यू वांट अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, you have to go to financial statement footnotes. How much interest you are paying, what is your rate of interest, किस लेंडर को आप कितना पे कर रहे हो. इफ यू वांट अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, यू नीड टू गो टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुटनोट्स, बिकॉज इन बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, वन लाइन आइटम विल बी गिवन टू यू, और आपको बोल देगा कि आपने इंटरेस्ट 500 करोड़ पे किया, उस पे 2 साल वाले लोन पे कितना इंटरेस्ट गया, 5 साल वाले लोन पे कितना इंटरेस्ट गया. इफ यू वांट अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, देन यू हैव टू सी वेयर यू हैव टू गो टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट footnotes, and it is a part of annual report of a company. Annual report means after every. So is it same to annex? Sorry. Hello. Yeah, come Sorry, again. sir. I just want to understand. It is same to what we called annexure to balance sheet and P&L items. You just No. mentioned in balance sheet annexure 1 to 23. Annexure is different. Annexure is basically you are adding a verified copy of something. अगर मैंने बोला कि मैंने एक लोन लिया है, तो जो लोन का पेपर आप ऐड करो, दैट इज annexure. उसको फुटनोट्स नहीं बोलेंगे बच्चे, ठीक है ना. annexure में भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होता है, बट इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुटनोट्स में आपको पूरा का पूरा डिटेल. annexure भी कई लोग बोलते हैं इसको, बट जनरली annexure में व्हाट वी डू, कि अगर हमने बोला कि हमने लोन लिया है कि नहीं, तो annexure में हो सकता है कि हम लोग लोन का डिटेल भी डालते हैं. कभी कभी annexure को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुटनोट्स बोल देते हैं, बट जनरली बोलना नहीं चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट. annexure में भी आपका डिटेल ही होता है हर एक आइटम का, नहीं. Okay, because normally, say for example, the interest on borrowing करके P&L में एक item रहता है, तो और वहाँ पे हमने का annexure 8 या 9, तो annexure वहाँ पे 8 लिखा था कि वहाँ short term पे इतना, long term पे इतना. कभी कभी देखोगे ऐसा लिखा होगा, उसके ऊपर ना एक हेडिंग 1 करके डाल देगा. अब 1 मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुटनोट्स में 1 पे जाओ, वहां पे आपको Correct, sir. I am referring to that. राइट. तो annexure भी हो सकता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुटनोट्स भी हो सकता है. आइदर यू कैन कंसीडर द सेम, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट थ्योरेटिकली डिफरेंस होना चाहिए, बट मानते नहीं लोग, दैट्स अ डिफरेंट इशू. ओके. Got it, नाउ sir. व्हाट आर द आइटम्स which are given in financial statement footnotes. तो डिटेल में नहीं, मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ, डिटेल तो अपन बाद में देखेंगे. सबसे पहला कि आपका बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है. बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन कहने का होता है कौन से फिजिकल पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हो, ठीक है. और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मान लो एक कंपनी है, उसके बहुत सारी ग्रुप कंपनीज है, सब्सिडरीज हैं, तो वो कंसोलिडेटेड है या स्टैंड अलोन. स्टैंड अलोन कहने का मतलब, मान लो आईटीसी का एक वर्टिकल आईटीसी होटल, आईटीसी ग्रुप में बहुत सारे बिजनेस, होटल भी है, सिगरेट भी है, बहुत सारे बिजनेसेस है. तो आपको बताना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर स्टैंड अलोन किसी आईटीसी के सिगरेट बिजनेस का है या ये कंसोलिडेटेड पूरे ग्रुप कंपनीज का है. दैट यू नीड टू इंक्लूड, ये आपको बताना पड़ेगा. देन कौन सा अकाउंटिंग मेथड, असम्पशंस, ये हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, अकाउंटिंग मेथड्स क्या क्या है, असम्पशंस क्या, और आपने क्या एस्टिमेट्स लिए. दिस हैज टू बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुटनोट्स. साथ में आपको फुटनोट्स में ये भी बताना पड़ेगा कि भाई इस पीरियड में कोई आपने एक्विजिशन किया है या कोई एसेट अपना बेचा है, आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लिया गया है, या कोई एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान आपने दिया है, कोई ऐसी कंटिजेंसी है, कोई ऐसा आपने कमिटमेंट दिया है. कंटिजेंसी कहने का मतलब it is dependent on something, right? कोई कमिटमेंट दिया है, कोई आपका सिग्निफिकेंट कस्टमर है जिसको आपने अक्वायर किया है, या यू हैव लॉस्ट अ सिग्निफिकेंट कस्टमर, सेल्स टू रिलेटेड पार्टीज, दो सिस्टर कंपनीज के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है. एवरीथिंग हैज टू बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुटनोट्स, ठीक है. सो ऑल दीज डिटेल्स हैज टू बी गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुटनोट्स.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुटनोट्स के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको हम बोलते हैं MD&A, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस या मैनेजमेंट कमेंट्री. व्हाट इट मींस, apart from giving detailed information about each item, the management of the company has to discuss with investors कि हमारा business का कैसा चल रहा है, what is the prospect of the business, how the company has performed. This is in this management discussion and analysis, the management of the firm is going to give their viewpoint about how business is doing, what is the nature of business, what is the competitive environment, how the company has performed, what are the different risks which is involved in this business. All these things has to be disclosed by the management of the company. So basically it is nothing but a viewpoint given by the management on the prospects of business, right? Ab management commentary or management discussion and analysis, whenever we say that we have prepared a financial statement, तो एक financial statement आपने prepare कर दिया, उसको आपको audit भी करना पड़ेगा, मतलब एक third party से verify भी कराना पड़ेगा. Independent third party is going to verify. But बैलेंस शीट वेरीफाई करा रहे हो, इनकम स्टेटमेंट वेरीफाई करा रहे हो, लेकिन मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस को वेरीफाई कर सकते हो. फैक्ट इज समथिंग व्हिच कैन बी वेरीफाइड, ओपिनियन कैन नॉट बी वेरीफाइड. इन मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो, सो that has happened, this can be verified, this is a fact. But if you're giving your opinion that in future we are expecting that we'll generate a profit of 20%, can you verify this? No, it is an opinion. Opinion cannot be verified. So what they are saying, some part of management commentary may be unaudited. Audit तो उसी का करेंगे जो fact है, opinion का audit नहीं होता है, right? सर इसको ऑडिट करना कंपल्सरी होता है? हाँ, किसको जरूरी है बच्चे? नहीं, मैनेजमेंट कमेंट्री को. इसमें जो फैक्ट है उसको तो आपको ऑडिट कराना ही पड़ेगा ना. आप बोल रहे पिछले साल हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, कैसे मान ले? आपने लिख के दे दिया तो नहीं मानेंगे ना. वेरीफाइड है क्या कि आपने सही में अच्छा परफॉर्म किया? नहीं. ठीक है सर. राइट, चलो. नाउ व्हाट हैपेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, SEC, Securities and Exchange Commission, is the regulator of capital market in United States. So what SEC says, that management discussion and analysis, what you need to disclose, what are the trends, what are the significant events which might impact your business prospect, what are the uncertainties related to your firm's business. All these things has to be discussed in your management discussion and analysis. Now coming back to audit, what is the audit? मैंने क्या बोला, audit तो यही होता है ना बच्चे, थर्ड पार्टी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने प्रिपेयर किया उसको वेरीफाई करेगा, एंड देन दे विल टेल यू वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, राइट? नाउ इन ऑडिट व्हाट हैपेंस, ऑडिटर माइट गिव यू सर्टेन ओपिनियन. ऑडिटर ने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे तीन या चार तरीके का ओपिनियन देते हैं, तो उसको मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या ओपिनियन हो सकता है बच्चे. पहला है अनक्वालिफाइड ओपिनियन. If the auditor is giving unqualified opinion, what it means, that your financial statements are free from every kind of omission and errors. कोई गलती नहीं है आपके financial statements. It is perfect. It is best for a firm to get unqualified opinion from the auditor. मतलब पूरा reliable है, कोई गलती नहीं है, no mistakes, no manipulations, no accounting fraud. If the auditor gives qualified opinion, मतलब आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया. Now what are those accounting principles? We are going to discuss. हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे भी आएंगे बच्चे, हम डिस्कस करेंगे अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी, वो सब में मैचिंग प्रिंसिपल एंड एवरीथिंग, कंजर्वेटिज्म, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस. But here what you need to remember, that if you are not following accounting principles, बाकी कोई errors and omissions नहीं है, but you're not following the accounting principles. I'll just give you one example of an accounting principle also. So if you're not following accounting principle, auditor will give you qualified opinion. ये तो फिर भी ठीक है. Auditor giving adverse opinion, यानी आप accounting standards को follow नहीं कर रहे. Accounting standard कौन बनाएगा? There is a regulatory body.
In India, we have Institute of Chartered Accountants of India. They have formed accounting standards. अगर आप accounting standards को नहीं follow कर रहे, किस item को कैसे आपको दिखाना है, books में कैसे show करना है, if you are not following accounting standards, the auditor might give you an adverse opinion. सबसे खतरनाक है disclaimer of opinion, where the auditor is saying, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या opinion दूं. I am not able to figure out anything. मतलब it's so confusing. फॉलो किया है नहीं किया कुछ पता ही नहीं चल रहा है, देन ही विल गिव अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, राइट. अब बोलता है एनी ओपिनियन अदर देन अनक्वालिफाइड इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज अ मॉडिफाइड ओपिनियन. ये सारा क्वालिफाइड हो, एडवर्स हो, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो, सबको हम बोल सकते हैं ग्रुप टुगेदर, वी कैन कॉल इट अ मॉडिफाइड ओपिनियन. द वर्स्ट फॉर अ कंपनी इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जहां पे उसको यही नहीं समझ में आ रहा है ऑडिटर को इसने क्या बनाया है, एंड ऑडिटर इज अनेबल टू गिव एनी ओपिनियन. दैट इज द वर्स्ट केस फॉर अ फर्म. Best case scenario is unqualified. So unqualified, you have followed all accounting principles, you have followed all accounting standards, there is no errors and omissions in your book. Qualified opinion, you are not following. सर इसको अनक्वालिफाइड क्यों बोल रहे हैं? वो तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और एससीसी बताएगा ना बच्चे. अनक्वालिफाइड कहने का मतलब कोई गलती है ही नहीं. क्वालिफाइड कहने का मतलब, क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब दे आर एबल टू टेल यू क्लियरली कि क्या प्रॉब्लम है. अनक्वालिफाइड कहने का मतलब देयर इज नो एरर एंड ओमिशन. क्वालिफाइड ओपिनियन कहने का मतलब आई एम गिविंग ओपिनियन, आई हैव अ प्रूफ दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. एडवर्स ओपिनियन कहने का मतलब एक्सट्रीम केस सिनेरियो हो गया कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया. डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कहने का मतलब हमें तो समझ में नहीं आ रहा हम क्या ओपिनियन दें, राइट. सो वर्स्ट केस सिनेरियो कुड बी व्हेन द ऑडिटर इज गिविंग अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. ठीक है सर, बट रियल लाइफ में कभी होता है क्या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन? बिकॉज़ नॉर्मली सीए का 2-3 मीटिंग्स होता है, जो भी क्वेरीज वो पूछते हैं उसको फिर वो कंपनी जो है रिप्लाई करती है, और फिर फाइनली 3-4 मीटिंग के बाद वो फाइनल होता है. नहीं, बिकॉज ठीक है, अंडरस्टूड. बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स आपको दिखाई पड़ेंगे. जैसे एक अकाउंटिंग टर्म है गोइंग कंसर्न असम्पशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोइंग कंसर्न असम्पशन? आई एम अज्यूमिंग दैट दिस कंपनी इज गोइंग टू ऑपरेट फॉर अ फॉरसीएबल फ्यूचर. ये लाइफ लॉन्ग ये कंपनी चलती रहेगी, कभी नहीं बंद होगी. दिस इज अ गोइंग कंसर्न असम्पशन. व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है ना. अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कुछ जैसे प्रिंसिपल है. एक प्रिंसिपल बोलता है कि मैचिंग प्रिंसिपल है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल? Shreya Mahajan, what is matching principle? I don't know, sir. Okay. कौन मैचिंग प्रिंसिपल कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे, कि अगर मान लो 2019 जैसे यूएस में फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर सेम होता है, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक. मान लो हमने 1 जनवरी 31 दिसंबर 2020 में अगर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया 100 करोड़ का, उससे रिलेटेड एक्सपेंस है. रेवेन्यू जनरेट हुआ तो उसमें खर्चा भी तो होगा सामान बनाने में, उससे रिलेटेड एक्सपेंस है 80 CR. What matching principle says, all expenses related to this revenue has to be recorded in same accounting period. यानी अगर रेवेन्यू 100 करोड़ था, उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए. भले आपने पे किया हो नहीं पे किया, उससे कोई मतलब नहीं है. All expenses related to the revenue should be recorded in same accounting period. That is what we call matching principle. ऐसा ही एक और प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल में क्या बोलता है, सी अगर मैं बोलूं कि सब अच्छा है, नहीं एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, मुझे आपको अलर्ट कब करना है? ये डॉक्टर आपको कभी अलर्ट इस बात पे नहीं करता कि यू आर फाइन. इफ यू आर नॉट डूइंग वेल या कुछ आप गलत करो तभी तो बोलेगा ये मत करो वरना आप बीमार पड़ जाओगे. So warning signal has to be issued. Now from financial reporting perspective, what this regulator says that if there is something good, कोई good news है, कोई अच्छा information है, not a problem, but don't give any shock to the investor. So what conservatism principle says, that be conservative in recognizing revenue.
यानी आपने सामान बेच दिया और आपने डिलीवर कर दिया, लेकिन आपको थोड़ा सा भी डर लग रहा है कि हो सकता है कि वो डिफॉल्ट कर जाए, अगला पेमेंट नहीं करे। अगर पेमेंट नहीं करे, आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, बाद में आपके पास कैश नहीं आया, there is a problem. So what they are saying, be conservative in recognizing revenue, be aggressive in recognizing expenses. मतलब expenses recognize करने में aggressive रहो, तुरंत रिकॉर्ड कर लो। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने में you have to be conservative. Similarly, be conservative in recognizing gains, but be aggressive in recognizing losses. This is called conservatism principle. यानी जहां खतरा दिखाई पड़ रहा है तुरंत रिकॉर्ड कर लो भाई, उसको कोई इन्वेस्टर को शॉक नहीं चाहिए। लेकिन जहां आपको लग रहा है कि any good information is coming, any positive development is happening, revenue and gain is obviously a positive development for any organization. So be conservative in recognizing gains and revenues. Be aggressive in recognizing expenses and losses. This is conservatism principle. So these are different examples of principles: matching principle, conservatism principle. You'll get to know lot many principles in, I think, next 1 or 2 or 3 reading when we'll be discussing, I think, balance sheet. We'll discuss all these parts in detail also, right? Moving on, what is this internal control? क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं एक बार, internal control को. What is the meaning of internal control here? First of all, the financial statement is prepared by the firm itself. भाई firm का भी तो अपना accountant होगा, वो भी तो financial statement prepare करेगा. Later on, it will be audited by a third party, right? So why don't you have a strong internal control so that whatever financial statement is being prepared by the firm, if it goes to the auditor, they get us in the very first hand, they get unqualified opinion. So if you have very strong internal control, there are less chances that you'll get any sort of a qualified or disclaimer of opinion or adverse opinion from the auditor. So they are talking about strong internal control, right? So that you don't have to face any kind of modified opinion from your auditor. Generally, what we say that companies prepare annual reports, but nowadays what is happening, majority of the companies are giving quarterly reports. So quarterly numbers are reported, right? And where you are going to find these informations? So in US, what happens? Securities and Exchange Commission is the regulator. So every company which is getting traded on stock exchange, they have to file this report with the regulator, and they have to file this report with Securities and Exchange Commission. So if you go to the website of Securities and Exchange Commission, there is something called EDGAR. In EDGAR, you'll find all these informations being reported by the firm, right? अब इसमें different forms होते हैं, इन forms के बारे में हम आगे discuss करेंगे, not here. Okay. One more statement which is there is called proxy statement. What is proxy statement? Let's say as a company, I have to take a major strategic decision that I want to acquire another company, or I have to sell one important asset of the firm, or a major strategic decision has to be taken by the firm. For taking a major strategic decision, they have to take shareholders approval. Shareholders से पूछेंगे तो सही कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. Now, if such major strategic decision has to be taken which requires shareholders approval or vote, for that company issues something called proxy statement, right? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सिलेक्शन होना है, कंपनी को नया शेयर्स इशू करना है, all these things, if it requires shareholders approval, for that company issues a statement called proxy statement. एक और चीज कंपनी इशू करती है जिसको बोलते हैं अपन कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स एंड प्रेस रिलीजेस. Now what happens nowadays, company has started with the process of giving Sir? earnings. हाँ जी. Yeah, I just wanted to understand what's the difference between resolution and proxy statement. Why a company goes for a resolution? Resolution में क्या होता है बच्चे? Sir, resolution में major decision के लिए shareholders के लिए कौन सा major decision बच्चे? Any example of major? Like director appointment or director resignation, Okay. or external auditor appointment. हाँ जी, यहाँ पे major strategic decision could be related to business also. कि अगर मेरे को नए business line में enter करना है, वो resolution में तो नहीं चाहिए होगा ना?
नहीं. right? So any strategy, basically मैंने basic एक term use किया, आपने ध्यान नहीं दिया उस पे. Strategic decision, it could be anything. Now board resolution आप जब लेके आते हो तो that's a legal formality. Proxy statement is not a legal formality बच्चे. अगर मेरे को बाइक खरीदना है, I am going to ask my parent, then my parent is going to ask me, okay fine, apply for a loan, get the bike, paper लेके और registration कराओ. So what you are saying that board resolution, it's a legal process जहाँ पे आप चीज को legalize कर रहे हो. Proxy statement, before doing that legal formality, you have to take approval, right? So this is a kind of getting approval from shareholders, right? Once you get an approval, then you come out with a board resolution. भाई ये हो गया, चलो. Are you getting the point now? Yes, thank you. Now, corporate reports and press releases. So I was talking about something called earnings guidance. Nowadays, every company has started with the process of giving earnings guidance. What is our expectation that in next year, how the company is going to perform, how much earnings the company will have, how much profitability the company is going to generate, that will be specifically mentioned in earnings guidance. अब आप बोलोगे, sir, थोड़ी देर पहले you have discussed about management discussion and analysis, wherein you said that how business is going to perform, what is going to be business environment, everything, what is the current performance, what is the past performance, that management is going to give its opinion on business prospects and everything. Here, when I'm talking about earnings guidance, specifically they'll talk about how much profitability they're going to generate or how much earnings firms will generate. That is part of earnings guidance, right? Specifically, I am talking here about only earnings, nothing other than earnings. In management discussion and analysis, that is a broad term. We'll discuss about so many factors. We'll discuss about so many things. But here I am specifically talking about earnings, right? Okay. CFA Institute likes this framework. What is this framework? Whenever, yes, sir. Yeah, I just wanted to know कि earning guidance अगर ये मतलब देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, तो जैसे ओपिनियन में कोई हार्ड वो नहीं चाहिए थे फैक्ट्स, तो अर्निंग गाइडेंस के लिए भी कोई फैक्ट्स चाहिए जो नहीं, ये तो ओपिनियन है कर बच्चे. पाए. नहीं, ओपिनियन है बच्चे. ये भी मैं बोल रहा हूँ कि अगले साल में 10 रुपए कमा लूंगा, तो मेरा ओपिनियन है. मैं कैसे, मैं I cannot say that no, I'll earn 10 rupees profit. How can you say you'll earn 10 rupees profit? Future is uncertain. Opinion has to be expressed as an opinion. Opinion cannot be expressed as a fact, right? आंसर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बिफोर रिलीज होता है और मैनेजमेंट एनालिसिस एंड डिस्कशन में भी सेम चीज होती है. जैसे वो वाइडर टर्म है पर ये इंक्लूड होता है उसमें भी, तो डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हुआ कि पहले हम इंफॉर्मेशन दे चुके हैं. व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप, मैं आपको बोलूं कि मैं एक लाइन पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट है कि सर आप ओवरऑल रिवाइज करा दो मेरे को. कुछ ऐसे एनालिस्ट होते हैं कि हमारे को ब्रॉड टर्म्स बता दो. आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू ईच एंड एवरीथिंग. व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट? कितना अर्निंग्स करोगे ये बता दो, बाकी सब मैं देख लूंगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप किस लिए बता रहे हैं? आउटसाइडर्स के लिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड द सोफिस्टिकेशन ऑफ ऑडियंस आल्सो, राइट? अब आप उसको पूरा 4 घंटे बिठा के बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट पढ़ाने लगो, सुनेगा क्या तुम्हारी बात? नहीं, राइट? ओके. I am talking about financial statement analysis framework. This is favorite topic of CFA Institute. Questions कभी नहीं पूछता, but framework हमेशा दे देता है. Whenever you are analyzing financial statements, right? What are the steps? First of all, why you are doing this analysis? You need to state the objective. What is the context? किस context में आप analyze कर रहे हो? ये तो बड़ा simple चीज है. Then accordingly you gather data. पूरे फाइनेंशियल ईयर का आपने डेटा गैदर किया. अब डेटा तो रॉ डेटा है, उसको यू नीड टू स्ट्रक्चर इट, यू नीड टू प्रोसेस द डेटा एंड देन यू एनालाइज, गिव योर इंटरप्रिटेशन. और उस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे देन यू कम आउट विद अ रिकमेंडेशन वेदर टू बाय और सेल. जो भी आपका इन्वेस्टर है, अगर आपको इकोनॉमिक डिसीजन लेना है, then you come out with certain conclusion. अब इस फ्रेमवर्क में ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं आपको स्पेसिफिकली बनाऊं. Now one important thing is here, I am a equity research analyst. मेरा काम क्या है? मेरा काम है अपने इन्वेस्टर्स को बताना कि शेयर को खरीदना है या नहीं खरीदना है. On 1st of June 2020, I initiated a report.
उसको बोलते हैं रिपोर्ट इनिशिएशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोर्ट इनिशिएशन? आई एम सेइंग दैट आई एम स्टार्टिंग टू कवर Reliance Industries Limited. Now for the very first time I am starting my research on Reliance Industries Limited. हमने 1st of January 2020 को Reliance पे कवरेज स्टार्ट किया, यानी इसको ट्रैक करना स्टार्ट किया. Now we'll start giving recommendation. So we'll do what? ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. नाउ वी आर गोइंग टू कवर Reliance Industries Limited and we are going to give recommendation to our clients. किस कॉन्टेक्स्ट में है भाई? शेयर का परफॉर्मेंस क्या होगा, क्या आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या टाइम पीरियड होगा, सब डिफाइन करना पड़ेगा. कि अगर हम आज के डेट में रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हैं, सो आई एम सेइंग दैट ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 months my target price for Reliance is let's say 2500 and I am giving a buy recommendation. रिकमेंडेशन लास्ट में आएगा बच्चे. कॉन्टेक्स्ट आपको कि हम इन्वेस्टर को बताना चाहते हैं कि 6 month टाइम फ्रेम में व्हाट हैज टू बी डन बाय द इन्वेस्टर. देन अकॉर्डिंगली यू विल गेदर डेटा. और उस डेटा तो रॉ डेटा, उसको आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, एंड देन यू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा एंड देन यू कम आउट विद योर रिकमेंडेशन. आपने रिकमेंडेशन दे दिया कि अगले 6 महीने में रिलायंस का प्राइस होना चाहिए 2500. देन यू हैव टू कम विद अ अपडेटेड रिपोर्ट. Updation means after 6 months, then you have to see whether your prediction is correct or not, and then you have to come up with updated report. मान लो 6 महीने भी पूरा ही नहीं हुआ, only 3 months has gone by, and after 3 months a sudden major development has happened wherein Reliance Industries Limited has entered into a strategic partnership with Facebook, blah 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 blah. Then what you have to do, you have to update your report. So updation is a continuation process. Initial covering or report initiation means you are stating to your investor that we have started covering this company for you, right? So this is financial statement analysis framework. So this brings an end to the entire discussion of reading 1, which is introduction to financial statement analysis. So in question bank, reading 19 ke sare questions you can solve and you can go through the questions of reading 19. So I don't think there is going to be any sort of a problem as far as reading 19 is concerned. Any doubt related to this, to today's class, you can ask me. Sir? Sir, Yeah, please go on. थैंक यू. सर मुझे क्वेश्चन पूछना है, ये जो प्रेस रिलीजेस होती हैं हाँ जी. ये भी ऑडिटर मतलब क्या ऑडिट करता है कंप्लीटली? नहीं क्योंकि नहीं ये बच्चे, भी नहीं ओपिनियन है ना. नहीं नहीं, प्रेस रिलीजेस वगैरह ऑडिट नहीं होता बच्चे. ओके सर. ऑडिट नहीं होता. हाँ जी. हेलो हेलो सर. सर. बोल बेटा. सर ये इंटरनल कंट्रोल्स जो होते हैं वो ऑडिटेड होते हैं क्या? इंटरनल जो ऑडिटर होते हैं कंपनीज के वो ऑडिट करते हैं? नहीं 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 नहीं, हमारे जो कंपनी का जो अकाउंटेंट है, हमने जो हमारे पेरोल पे है बच्चे, वो इंडिपेंडेंट नहीं है. इंटरनल भी मींस कह रहे थे इंटरनल जो अकाउंटेंट्स होंगे ना. हाँ हाँ, वो प्रिपेयर करते हैं बच्चे, वो उनकी बात कर रहे हैं. कपूर साहब आइए. Sir, actually, I watched that video that you shared on last weekend. So there was a discussion. उसमें you said कि जैसे एक as a investor अगर मेरे को dividends की जगह मेरी जो मतलब जो retained earnings हो रही हैं उससे भी I should be okay because उससे market price बढ़ जाता है शेयर का, right? बोलो आगे सुन रहा हूँ. हाँ, so my point was कि अगर हम ये केस A लेते हैं एंड हम कहते हैं कि ठीक है हमारा मार्केट प्राइस बढ़ गया, सो मतलब इन अ वे मेरे को मिल गया रिटर्न डिविडेंड की जगह. बट अगर हम केस फर्स्ट इनकम होगी एंड सेकेंडली आवाज चली गई सर, आपकी आवाज गायब हो गई. मेरा शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, सो डोंट यू थिंक कि केस बी बेटर होगा? केस बी मैंने पूरा सुना ही नहीं, मेरा ही इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है. ओके सर एक्चुअली whether you pay dividend or you retain, this is all based on perception. पहले मैं अपनी बात बोल देता हूँ, फिर आप अपना आंसर ढूंढ लीजिएगा. अगर एक कंपनी पेज हायर डिविडेंड, अगर उसको 100 रुपए की अर्निंग हो रही है, उसमें से 90 रुपीज डिविडेंड ही दे देता है और बहुत थोड़ा सा अमाउंट रखता है रिटेन में, कहने का मतलब
कि आपको तो बड़ा खुश होना चाहिए कि यार कंपनी जो है क्या करती है, पूरा का पूरा डिविडेंड दे देती है। लेकिन इसमें एक और पॉसिबिलिटी है कि व्हाई कंपनी इज पेइंग सो मच हायर डिविडेंड, बिकॉज कंपनी को लगता है उसके पास ये पैसा रख के क्या करना, हमारे पास तो कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में है ही नहीं। दैट्स अ नेगेटिव सिग्नल ऑल्सो। दूसरी तरफ कंपनीज क्या है, कई कंपनी डिविडेंड देती ही नहीं है, इन्वेस्टर उस पर भरोसा भी नहीं करेगा, बोलेगा यार कभी डिविडेंड तो देता नहीं, हर एक साल बोलता है हमने प्रॉफिट कमा लिया। दिस इज ऑल बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स परसेप्शन। नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, इट्स ऑल कॉल्ड सिग्नलिंग इफेक्ट, जिसको बोलते हैं सिग्नलिंग इफेक्ट। Now you have to see what kind of a signal you are going to pass it on to the investors. अगर आप हर एक साल हायर डिविडेंड देते हो, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं से एक इंडिकेशन है कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट? अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, विच मीन्स व्हाट, दिस इज आल्सो नेगेटिव सिग्नल, यार दिस कंपनी कैन नॉट ग्रो बिकॉज इनके पास तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। उसके बाद एक चीज क्या आता है कि अगर मान लो आपने हायर डिविडेंड नहीं दिया, आपने रिटेन्ड अर्निंग्स, हमेशा आप बोलते हो कि नहीं नहीं हमारे पास पैसा रहने दो, आप लेके क्या करोगे, अगर आप पैसा लेके बाहर में इन्वेस्ट करोगे 10% से, हम आपके पैसे को ग्रो कर देंगे 15% से। लेट दिस मनी बी रिटेन्ड विद अस, विल ग्रो योर मनी एट अ फास्टर रेट, राइट? सो व्हाट डज इट मीन? एक तरह से तुम क्या बोल रहे हो इन्वेस्टर को कि चलो ठीक है हम 15% के हिसाब से, लेकिन एक टाइम ऐसा है इन्वेस्टर बोलेगा हर एक साल तो पैसा रखता है, ये देगा कब मेरे को? अगर मैंने किसी को पैसा दिया और वो हर एक साल बोलता है कि नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, पैसा आपका ग्रो हो रहा है, तो भरोसा करोगे क्या बच्चे? दिस इज ऑल कॉल्ड सिग्नलिंग इफेक्ट। इसमें कोई केस 1 केस 2 डिपेंड करता है what kind of a signal it is going to what kind of a signal you want to pass it on to the investor. Investors are very skeptical, कंपनी डिविडेंड नहीं देती, ऐसे कंपनी पे हमें भरोसा नहीं था, आपको उस केस में डिविडेंड ही देना चाहिए, राइट? यस सर। एंड सर एक और डाउट था, मतलब देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच माय एंड पे। सो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में आपने कहा था कि फैक्ट्स जो होते हैं वो ऑडिट करवाने होते हैं, राइट? क्या बोल रहे हो शायद? सर एज इन मतलब मेरे एंड पे कुछ टेक्निकल ग्लिच था, सो मेरे को बस ये पूछना है कि मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में जो फैक्ट्स होते हैं वो कंपनी को ऑडिट करवाने होते हैं? कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखो वो ऑडिटेड ही होना चाहिए। सो मतलब आप कुछ भी बोलो, हम आपकी बातें भरोसा नहीं करें, अगर कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको ऑडिट तो होना ही चाहिए। तो फिर सर ये मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑडिटेड माना जाएगा या अनऑडिटेड, मतलब एज इन अगर कोई अरे पूछ बाबा, ले मैंने बोला just- कि अगर पास्ट परफॉर्मेंस की बात करो वो तो फैक्ट है, वो तो हो चुका है, उसको तो वेरीफाई किया जा सकता है, उसको ऑडिट कराओ। जो फ्यूचर के बारे में बोल रहे हो उसको ऑडिट मत कराओ, बिकॉज वो तो ओपिनियन है, उसको ऑडिट कैसे करा सकते हो? एमडीएनए में पास्ट की भी बात कर रहे हो, फ्यूचर की भी बात कर रहे हो। जो वेरीफाई हो सकता है yes उसको sir. वेरीफाई कराओ, जो नहीं हो सकता उसको नहीं कराओ। फैक्ट है तो वेरीफाई कराओ, अगर ओपिनियन है तो मत कराओ, बिकॉज एमडीएनए में फैक्ट भी हो सकता है, Okay sir. ओपिनियन भी हो सकता है, ठीक है? All right sir. Yes sir. सर एक मेरा क्वेश्चन था, बोलिए सर। जो कंपनीज सीएमए डेटा देता है बैंक्स को फॉर फाइनेंसिंग एंड एवरीथिंग, हाउ यू विल वेरीफाई सर कि वो एक्चुअल में उतना अचीव करेगा? बिकॉज इसमें कैसा लास्ट ऑडिट कुछ डेटा रहता है, कुछ एस्टिमेटेड फॉर करंट ईयर रहता है और प्रोजेक्शन 3 साल का रहता है। एस्टिमेट को आप वेरीफाई नहीं कर सकते सर, वो एस्टिमेशन है, ओपिनियन है, ओपिनियन को आप वेरीफाई थोड़ी कर सकते हो। वो तो आप बेस्ट केस वर्स्ट केस सिनेरियो लेके देखो, आपका असेसमेंट है कि नहीं? वो आपके इंटरप्रिटेशन एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है, उसको वेरीफाई नहीं कर सकते आप। बिकॉज व्हाट आई एम आस्किंग दिस, बिकॉज बैंक जो फंडिंग करता है वो तो आपके प्रोजेक्शंस पे ही करता है, राइट? से फॉर एग्जांपल मेरा लास्ट ईयर 500 करोड़ का टर्नओवर था और नेक्स्ट ईयर आई एम प्रोजेक्टिंग फॉर 600 करोड़। हाँ तो वैसे ही होता है ना कि भाई बैंक्स ऑन दैट बेसिस, हमने पहले मालिया को पैसा दिया, मालिया ने टाइम पे लौटा दिया, अगली बार भी लौटा ही देगा, फिर दे दो पैसा। हाँ नहीं करेक्ट। सो मैं जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई एज एन एनालिस्ट कि ये अरे जो उसने विराज नाटू, सेल्स या प्रोजेक्शंस दिया है वो थोड़े विराज एग्रेसिव नाटू, है या नहीं है? विराज नाटू, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माय ट्रेड सीक्रेट। यस सर। तो वो बच्चे मैं 2 मिनट में कैसे बता दूं? 20 साल का एक्सपीरियंस बताओ। ओके ओके। अगर मैं बताने चलूंगा तो आपको मैं 90 घंटे भी बोलता रहूंगा तब भी आपके लिए कम पड़ेगा। That's a very broad thing you're asking for, बच्चे. I cannot explain it in a simple CFA Level 1 class. That's not possible, right? अंडरस्टूड सर। ओके। Right, sir.
कहने का मतलब अभी भी आपकी मैं जो क्लास ले रहा हूँ